तो डरने की क्या बात है। क्या बात है बाबा, तू साथ है तो डरने की क्या बात है। तू पास है तो डरने की क्या बात है बाबा, साथ है तो डरने की क्या बात है। When you hear I have no fear, oh my Baba, you are my dear. When you hear I have no fear, oh my Baba, you are my dear. चलते रहे हम, चलते रहे तेरे नक्शे कदम पर, चलते रहे गाते रहे गुनगुनाते रहे गीत खुशी के हम गाते रहे। हो जिसका हो साथी खुद भगवान, जिसका हो साथी खुद भगवान, उसको रोकेगा क्या आंधी या तूफान। हम चल पड़े हैं अब बाबा के धाम, हम चल पड़े हैं अब बाबा के धाम। जीवन हुआ ये अब उसके नाम। तू साथ है तो डरने की क्या बात है। तू पास है तो डरने की क्या बात है बाबा, तू साथ है तो डरने की क्या बात है। तू साथ है तो डरने की क्या बात है। तो डरने की क्या बात है। तो डरने की क्या बात है। ओम शांति सभी को। ओम शांति। तो हम इस क्लास को 2 मिनट का साइलेंस से शुरू करेंगे बाबा की याद में, और फिर हम वैदिक मैथ का क्लास स्टार्ट करेंगे।
ओम शांति। तो अभी हम क्लास शुरू करते हैं। तो आज हमारा 6th डे है इस कोर्स का, और I hope that you've been practicing all the previous days and it's been useful in your mathematics, because if we by practicing it will stay with you for well, okay. तो अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो ये मैथ आपके साथ और it'll stay with you for a longer time instead of just being like forgotten. और अगर आप बहुत प्रैक्टिस करेंगे तो जब आप एडल्ट बन जाएंगे तो जब आपको कैलकुलेशंस करना होगा किसी भी काम के लिए तो आपको बहुत आसान होगा। तो इस डे 6 में सिर्फ अभी 9 लोग हैं, तो हम पहले रिव्यू करते हैं कि पहले क्लास में क्या हुआ था। So in the last class we learned easily multiplying numbers by 11. जैसे 78 times 11। हाँ, तो सभी ने पहले क्लास को सुना है? जी भाई जी। Okay, तो okay, so next, tips and tables for squares 11 to 23. जैसे कि हमारा टिप्स थे जैसे 19 स्क्वायर्ड हम उस टिप से लिए थे 361। और फिर finally special tricks for multiplication, like 125 squared equals 1565. तो हमने ये तीसरे वाला टॉपिक हमने उसको फिनिश नहीं किया, तो जब हम स्टार्ट करेंगे तो हमारा पहला टॉपिक ये सिर्फ होगा स्पेशल ट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि हमने उसको फिनिश नहीं किया। Okay, और फिर हम अभी तक उतना लोग नहीं ज्वाइन हुए हैं, तो हम अभी इस पहले वाले टॉपिक्स को प्रैक्टिस करेंगे। जैसे मैं सभी को अनम्यूट अलाउ करने वाला हूँ, and I'll put one number in the chat and then you have to find the square of that number. It's going to be from 11 to 23, and then someone will have to answer and write it in the so answer out loud of what the answer is. तो जैसे मैं अभी ये लिख रहा हूँ चैट में, तो फिर इसका स्क्वायर क्या है? ओम शांति। सभी बच्चे वीडियो ऑन करें। आप लोग पढ़ाई कर रहे हो ना, तो वीडियो ऑफ करके कैसे कोई बोल रहा है और आप देख रहे हैं, समझ रहे हो। सभी बच्चे वीडियो ऑन करें। अनुश्री, पूर्णिमा, जो ज्वाइन है कम से कम वो ओके। क्या है, जो पढ़ाने वाला है वो देखता है, बताता है, फिर आप रिस्पॉन्स देते हो, तब क्लास में समझ में आता है और अच्छा लगता है। ओके, कंटिन्यू रखें। लक्ष्य स्टार्ट करें। लक्ष्य लावित। जी दीदी। तो ये 19 का स्क्वायर क्या है? रेज हैंड कीजिए और फिर हम आपको अनम्यूट करेंगे।
तो 19 का स्क्वायर है 361, जैसे हमने वो स्टेप को लास्ट क्लास में सीखे थे, लाइक 9 times 436 और फिर 9 times 981 और वो 361 हमने वो ट्रिक पहले क्लास में भी सीखे थे, वो आप यूज कर सकते हैं। तो अभी हम एक्चुअल क्लास को शुरू करेंगे और वो है टॉपिक 10 कंटिन्यू, क्योंकि हमने लास्ट क्लास इसको नहीं फिनिश किए हैं तो अभी हम उसको कंटिन्यू करेंगे। तो हमारा पहला इसमें है totaling 10. Tens are the same and the ones add to 10. So we can take an example of 53 times 57. So this technique is called totaling 10 because the ones add up to 10. And because they add up to 10, there's a special method we can use for that. The tens are the same and the ones add up to 10. So there's a special way we can do this. So this is equal to 5 times 5 plus 1. on the left-hand side. And the right hand side is 7 times 3, which are the two one digits. So here, since 5 is the tens that are the same, we do 5 times 5 plus 1. And then the right-hand side is just going to be the two digits that add up to 10. Like 3 times 7 would become 21. So we got 5 times 6 and 7 times 3. So really 7 times 3 didn't really change there, but. And then 5 plus 1 became 6. 5 times 6 is 30, and 7 times 3 is 21. So now we have 3021. Which we can combine into 3021. So that shows how we can do totaling 10 when the tens are the same and the ones add up to 10. Does anyone have a question? If you have a question, you can raise your hand. Okay, तो किसी को question नहीं है, हम continue करते हैं. So here are some examples. Let's just take the second example. So 79 times 71. The sevens, the tens, they're the same, and because they're both 7, and the ones, 9 and 1, they add up to 10. 9 plus 1 equals 10. So the tens will take 7 times 7 plus 1, and there's just 7 times 8, 56. And for the right-hand side, we'll take 9 times 1 is 9, and then a 0, 9. And one thing special about this, because 9 and 1 is the only pair. 9 and 1 is the only pair of numbers that add up to 10, but when multiplied, give a number less. So 9 and 1 as one digits are the only case where you'll have to include an extra 0. So here, left-hand side 56, right-hand side 9, 0, 9. So the full answer of 79 times 71 is 5609. And so is someone able to explain 84 times 86? You can unmute and try to explain this one. 84 times 86. Or we will unmute one random person and they will have to explain this one. If anyone has a question, they can also ask now. Okay, I'm sure. 4 times 6 is 24 and 8 times 9 is 72.
Okay, तो final answer क्या होगा? 7224. जी, okay. Thank you, अनुश्री. तो अभी हम ये पहले एग्जाम्पल को ले लेंगे, ले रहे हैं 128 and 122. तो ये एक एक्सटेंशन है, तो वो बहुत बढ़ रहा है, तो क्योंकि now the tens place, it isn't exactly a tens place anymore. It's tens and hundreds, but that still counts. 12 is the same as 12 in the next, and 8 and 2 still add up to 10. But since this is bigger, then we're gonna also, then instead of when we multiply the two ones places, they're still supposed to bring 2 digits. Because they're still 1 digit times 1 digit. So तो यहाँ पर tens value का है 12, ये 12 same है दोनों sides में, और 8 और 2 add up to 10 होते हैं. तो फिर right hand side अभी तक 2 digits है, और left hand side और बड़ा होगा क्योंकि 12 times 13 कर रहे हैं. So 12 times 12 plus 1, 12 times 13, वो होगा 156. So दूसरा side, right side, क्योंकि 8 and 2 are only 1 digit, then the answer then it's gonna be 2 digit, 16. So the final answer is 15616. And if we take the third example, in this case, it's a different extension. The tens place is the same, and the ones add up to 100. हम अभी last example 405 and 495 को later show करेंगे क्योंकि वो थोड़ा और complex है. तो ये दोनों कुछ practice problems हैं, तो हम थोड़ा time देंगे और फिर आप ये दोनों का answers, we'll have to give the answers to these ones. $37 times 33 and 154 times 156. So abhi, now we're going to check the first question. So कोई कोई unmute करना चाहता है इस first question का answer करने के लिए? अगर आपके पास question है तो आप ask कर सकते हैं. Okay, तो फिर हम random person को pick करेंगे. Okay, पूर्णिमा, आप वीडियो ऑन कीजिए और फिर इस question का answer समझाइए. Like how can we solve this question and what's the final answer?
कि तो हम दूसरे पर्सन को पिक करेंगे। दिव्या दीपिका। So how can we solve this question? Like, what are the steps to solving this one? Okay, तो अभी हम explain करते हैं इसको। तो हमारा टेंस सेम है क्योंकि दोनों 3 है और वंस उसका सम है 10। 7 + 3 is 10। तो हमारा लेफ्ट साइड है 3 as 10's digit times 3 + 1 which is 3 times 4 और वो बन जाता है 12। और हमारा राइट साइड is 7 times 3 तो वो बन जाता है 21। तो हमारा आंसर बन जाता है 1221। सबको इस प्रोसेस समझ में आया है? कुछ क्वेश्चंस नहीं है? रति, आपको कोई क्वेश्चन नहीं है? पूछो। जो समझ रहा है, नहीं समझ रहा है, पता तो चलेगा। अनुश्री, रति, गिरीश, पूछिए आप लोग। रिद्धिमन अभी आया है और आराम आराम से आ रहे हैं। ओम शांति दीदी, सॉरी। वाह, क्या एक शब्द में सारा काम निकाल लिया है ना। कल मीटिंग है बच्चों, आप लोगों का सुन रहे हो? कल आप लोगों को सबको क्लास अटेंड करना है, कल मीटिंग लेते हैं। पूछो, अभी जो पढ़ा रहे हैं ना, लक्ष्य भैया जो पढ़ा रहे हैं वो मेहनत करके आप लोगों को पहले से रेडी करके वो टाइम से ज्वाइन किए हैं और आप लोग मनमर्जी है, जब चाहे तब हम क्लास में आए। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, नोट करो ना। ऐसी ऐसी चीजें हर जगह थोड़ी ना मिलती है और हर किसी के स्कूल में क्लास थोड़ी ना होती है वैदिक मैथ्स की। जब इसमें हो रही है, आपको पढ़ाया जा रहा है, बताया जा रहा है, तो उसको समझना चाहिए ना, फायदा लेना चाहिए, सब आपके काम आने वाला है। अब लक्ष्य अगर ये लोग ना बताएं तो आप क्वेश्चन करो और इनसे पूछो, अब फिर ये जवाब देंगे। Okay, दीदी। चलिए आगे कंटिन्यू कर रखें। तो ये सेकंड वाला प्रैक्टिस प्रॉब्लम 154 times 156। अगर किसी को इसका आंसर नहीं देना चाहते हैं तो हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। ये दूसरे लेवल का क्वेश्चन है। ओम शांति भैया, आप क्या एक बार फिर से एक्सप्लेन कर सकते हैं थोड़ा सा? जी, हम यहाँ पर फिर से एक्सप्लेन करेंगे क्योंकि कुछ और लोग ज्वाइन हो गए हैं। तो हम लर्न कर रहे थे स्पेशल ट्रिक्स फॉर मल्टीप्लिकेशन। ये कंटिन्यूड है लास्ट वीक से और 2 weeks ago से। तो जो मेथड हम अभी सीख रहे थे, totaling 10 same ones add to 10। तो जैसे 53 times 57, the tens place 5 is the same in both sides, and the ones place 3 and 7, they add up to 10। That's the pattern here. 5 is the same, 3 plus 7 होता है 10। तो फिर ये इक्वल होता है इसमें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड है 5
times 5 plus 1. 5 और जो उसके 1 plus 1 है उसको multiply करेंगे और फिर 7 times 3. 5 plus 1 होता है 6. 5 times 6 30 और 7 times 3 21. 30 21 with the final answer 3021. तो आपको समझ में आया है रिद्धिमा? हाँ जी। ओके, तो हम कुछ एग्जांपल प्रॉब्लम ले रहे थे. So there's this second and fourth example problem. You just saw how we were doing it. Like these ones, we just showed you how to do it up here. So this first one, 12 8 times 12 2. 128 times 122. So the tens digit 12 is the same both sides, and 8 and 2 add to 10. So we just repeat the same process. So 12. 12 times 13, 12 times 12 plus 1 is 12 times 13, and that gives us 156. And when we multiply the ones digits, because they add up to 10, and they're 8 and 2, then we get 16. So we get 15616. So that's the thing we were showing just now, and we had given some practice problems. 151. Okay, तो प्राची इसमें आंसर दे रही है, तो प्राची आप एक्सप्लेन कर सकते हैं कि आपको इस आंसर कैसे मिला है? कुछ सुनाई नहीं दे रहा है. आवाज नहीं आ रही है. Okay, तो ये आंसर तो सही है, पर हमको प्रोसेस भी समझना. We have to understand the process also, so we can repeat answering questions like this. Okay, so 15 is the tens digit here. It's the same. 15 times 16, it's 240 if you do the multiplication. And then 4 times 6 in the end is 24. So 240, 24. That's the final answer. 44,024. Okay, तो ये होमवर्क का प्रॉब्लम्स है. अगर उसमें आंसर दिखाई दे रहा है तो फिर आप सिर्फ उसको रिसॉल्व कीजिए, पर ये होमवर्क का प्रॉब्लम्स है. तो इसको नोटबुक में लिखिए और फिर नेक्स्ट क्लास में हम इसका आंसर देखेंगे और आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि कैसे आंसर मिला है.
ओके, तो अगर आप इसको नहीं लिखे हैं अभी तक तो फिर लास्ट में चेक कर सकते हैं कि प्रॉब्लम्स क्या थे और फिर उसको राइट कर सकते हैं। तो अभी हम नेक्स्ट, ओके, तो फिर हम इस टॉपिक को वन लास्ट टाइम हम एक्सप्लेन, तो फिर हम बोर्ड पर शो करते हैं कि हम ये प्रोसेस बोर्ड पर शो करते हैं। तो अभी हम प्रॉब्लम लेते हैं 3733। Not necessarily. I think so. We have done this one question, same question. Okay, तो अभी हम No, Yeah. I can understand how you got it. actually yes we have. Let's just take a different one. Any different. 54. That's very similar to 57 and 53. Okay, 54 to 56 हम ये प्रॉब्लम अभी ले रहे हैं। तो हमारा left side है 5 times 5 plus 1 or 5 times 5 plus 1. 52 times ये फाइनल प्रॉब्लम है 52 times 58। तो ये लेफ्ट साइड 5, ये 5 is 10। आप यहाँ देख सकते हैं कि ये डिवाइडिंग लाइन है, ये राइट साइड का है और ये लेफ्ट साइड का है। तो 5 ये दोनों साइड्स में सेम है, तो हम करेंगे 5 times 5 plus 1। क्योंकि दोनों 5 है तो हमारा 5 plus 1। तो हम ऐसे कर सकते हैं 5 times 1 plus 5 और वो हमको मिलेगा 6। और इस साइड पर wait multiplied by 6। So 5 times 1 plus 5 is 5 times 6, which is finally 30। On the right hand और side, दूसरे को हम सिर्फ multiply। so 2 times 8 becomes 16। और हमारा 16। आंसर बन जाता है 3016। 3000. जी 3016। तो सभी को समझ में आया है? Yes. क्या अगर किसी को क्वेश्चन है तो वो हैंड रेज कीजिए। I wanted to ask this thing that when we have multiplied 5 into 5, it came 25. No, like 5 5s are 25. When we have added 1 plus, then it will become 56. तो ये 5 दोनों साइड में सेम है, तो हम 5 times 5 plus 1 नहीं करेंगे, पहले इस 5 को plus 1 करेंगे। like 5 plus 1 ये होता है 6। तो ये 5 जो यहाँ था ये 58, तो इसको plus 1 करेंगे तो ये 6 होता है। अभी इस प्रॉब्लम के लिए 5 plus 1 है 6। Okay, so it will be like 6 5s are 30. हाँ 6 5s यहाँ पर 30 बनता है, तो ये हुआ कि हम इसको कैसे मिले हैं। So 5 और ये दोनों 5s थे, 5 times
5 plus 1 ये होता है 6, so 5 times 6 ये 30 है. Okay. And does that answer your question? Yes. Okay. तो मुझको लगता है कि और कोई क्वेश्चंस नहीं है, तो अभी हम कंटिन्यू करते हैं. Can you give one more like question? One more example question. So let's do. So 119 times 111. That's the problem we're going to do. Can I? Yes, Ridhiman, you can explain. Before I tell now, I wanted to ask, like in this one, as it is of 3 digit, so in this one we will do the same thing as we have done into like 52 into 58 one, like taking the last one, left one digit, and then like adding one and 1 into 2, that one. Yes, so I'll just give this as a reference. This is the dividing line here. Okay. So first we will do like 11, the down one 11 plus 1, which will be 12. So 11 into 12. 11 into 12. Which will be 132, and then 9 into 1. 32. 9 ones are 9. The answer will be 1329. Or यहाँ पर zero. So ये सिर्फ 9 नहीं होता है, 09 होता है, क्योंकि राइट हैंड साइड में 2 डिजिट होने चाहिए. So 13209. यहाँ आप देख सकते हो कि यहाँ 1 डिजिट है और यहाँ भी 1 डिजिट है. तो जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका आंसर 2 डिजिट होने चाहिए. 1 डिजिट प्लस 1 डिजिट, तो आंसर में 2 डिजिट होने चाहिए. First, ये सही एक्सप्लेनेशन है. तो no. Okay, तो अभी हम नेक्स्ट टॉपिक पर जाते हैं. सेम टॉपिक पर एक और ट्रिक है. तो अब हमारा ones प्लेस सेम होगा और हमारा tens ऐड करेंगे 10 में. तो ये सेम ट्रिक है, पर इस टाइम the ones digit is the same and the tens add up to 1. What? Like Add up to 1. add up to 10. It's reversed. तो जैसे हम लेते हैं 34 times 74. So you can see the pattern here. So the 4 is the same, the ones digit is the same, and then the tens 3 7 makes 10. So हमारा left side है 3 times 7 and then plus 4. We got 3 and 7 because those are the two tens digits, and 4 is our ones digit. On the right side is just 4 squared. Because 4 is our ones digit, so we squared it. Left hand side, 3 times 7, those are the tens digits, and then plus 4. So we just put plus 4 there.
that will So- get us 21 plus 4. And 3 then times 16. 7 is 21. So that's 3 times 7 plus 4, 21 plus 4. And on the right hand side, we just have 16, 4 squared. You can see this became 3 times 7 was simplified to 21 and 4 squared into 16. And then if we do this again, we're going to get 2516. And that gives us 2,516. Okay. Did everyone understand this process? Yes. Okay. हम सभी अनम्यूट कर सकते हैं यस और नो बोलने के लिए या क्वेश्चन आस्क करने के लिए. Okay. तो हम एग्जांपल्स लेते हैं. (82 times 22). Okay, तो ये सब एग्जांपल्स हैं. तो पहले एग्जांपल 82 22 2 both sides में सेम है 1 digit में और फिर 8 times 2. So हम लेंगे 8 times 2 plus 2 on the left hand side. So 16 plus 2, which has 18 on the left hand side. And then 2 times 2 is 4, or 2 squared is 4, I mean. 2 squared is 4, and then we need to put a 0 on the left of 4 just to make it 2 digits. Because 2 is 1 digit and 2 is 1 digit. So then we have to take 2 digits. Okay, so for final answer 18 left or 04, right? 1804 final answer. And okay, we'll take this next example, then we're gonna ask someone to explain the process. So Safi, ready? So make sure you're ready because we're gonna ask someone to do this third example. Second example, 97 times 17. 7 same hai, or 9 plus 1 is 10. So 9 times 1, so on our left side, we first take 9 times 1, that gives us 9. And then we add 7, which is on our right side, which is the ones digit, which gives us 16. 9 plus 7 is 16. And that's our left side. And then the right side is 7 times 7, the two one digits, or just 7 squared. And that gives us 49. So then our answer is 1649. Okay. So up here, ये third problem, 36 times 76. तो इसका process कौन explain करेगा? करेंगे. Okay. तो हम पृथ्वीराज, आप explain कर सकते हैं? 36 times 76 को कैसे solve करें? Yes, I can. First we will write like 36 into 74. We will take 3 into 7 in bracket plus 4. And then we ये will take 36 4. Should I कोई भी नहीं कर सकते हैं, इसको आंसर कर सकते हैं. 36 times 76, last digit 6. Our tens digits है 3 or 7.
So what's the process we can use to solve this? 3 We 7. will first multiply 3 into 7, Yes, okay. which will be 21. And in the answer, we will add 6. Yes. It will be 27. And on the other side, we will do like 6 square, which will be 12. And now 27 plus 12, which will be 2712. 6 का square है 36. Yeah. 6 times 6 होता है 36. वो ठीक है. So 27 36. Fine. Yes, yes. I'll just do like 6 in. Yeah, it's just एक multiplication there. 27 36. 36 76. 27 36. Okay. What's next? तो यहाँ कुछ practice problems हैं. ये last example भी हम explain करेंगे और फिर आप सभी इस practice problems को solve कीजिए. तो Should I tell the answer? for which one? The 48 into 68 you were saying na first. Okay. तो आप इसका answer बता सकते हैं. We will first do the same thing like 48 into 68, which will be 4 into 6, which will be 4 into 6, which will be 24, and plus 8. So 24 plus 8 is equal to 32. And on other side, we will do like 8 square, which will be like 8 into 8. So 8 8s are, we will get 64. Now 32 when added with 60, like not added, like when we will combine 32 and 64, we will get 3264, like 3264. जी. तो मुझको लगता है कि इस totaling 10 को सभी को समझ में आया है. Everyone understands this process. So we have 2 practice problems here. I'll give some time so that you can answer them. What did you say? I was just saying that सभी इस practice problems को solve कर सकते हैं कुछ time दे हाँ. Okay. I have solved.
ओके, तो अभी पहले क्वेश्चन का आंसर और प्रोसेस Can I tell? अभी हम किसी और को चांस देंगे, लाइक पृथ्वीराज आप कह रहे थे। क्योंकि मुझको पता है रिद्धिमान को इस प्रोसेस में को समझ में आया है, पर कुछ प्राची प्राची Can you listen me? yes, so we can hear you now. Okay. First, we can take 3. 3 into 3 is equal to 9, and we add 0 to it, is equal to 9. Then we do 7 into 3 is equal to 24. So the answer is 2409. Yes, 2409. So 7 into 3 is 21, or 7 times 3 21, और फिर ये 1 से है 3, so 21 plus 3 है 24. तो ये है हमने 24 के लिए हैं कि ये आपने इस प्रोसेस में 7 times 3 is 21, और फिर plus 3 is 24. 7 to 3 is not 24. I have added 3, but I forgot to tell about that. Okay, मैं सोच रहा था कि यार 7 times 3 equals 24 ऐसे मिला है। Okay, ये सही explanation है। और फिर दूसरी question, 45 times 65. Can I tell? Okay, रिद्धिमान इसका आंसर भी बताएगा। We will first do like 45 into 65, which will be 4 into 6 plus 5. So 4 6 are 24 plus 5, which will be 29. Then we will do 5 square, which means 5 into 5, which will be 25. So 2925. जी 2925 ये सही आंसर है। तो फिर मुझको लगता है कि सभी इसको समझ रहा है। रिद्धिमान is giving all the right answers here. And okay, I think next is just homework. You're actually Okay, तो सभी इस problems को notebook में लिखिए और next class में हम इसका answer देखेंगे। Done and solved. अभी ये इस problem को अभी solve नहीं करना है, homework के लिए solve करना है। दिव्या Yeah, I know, but I solved it mentally. अरे ये कहाँ से है ये पढ़ना लिखा ठीक है कहाँ जाके लिखा है चलो Note it down.
तो जो भी इसको नहीं लिखा है वो लाइव स्ट्रीम पर चेक कर सकते हैं कि क्वेश्चंस क्या थे अभी। ओके, तो अभी हम कुछ प्रैक्टिस इस टॉपिक का ट्राई करेंगे इस बोर्ड पे। ओके, और फिर ऑलमोस्ट टाइम हो गया है फिर। Okay, so first of all, $47 times 43. Okay. Oh wait. Oh. 74. Okay. 74 times 34. ये दूसरे टॉपिक का क्वेश्चन है। Totaling 10, the tens digits add up to 10, or if your one digits add up the same. तो इसका आंसर Ridhiman or Prachi, we need to ask someone other than Ridhiman and Prachi for right now. We need to see if everyone understands this. Okay. Yeah, जी. Okay. So Akansha, आप इसको can you explain this 7434? Akansha Khera. Okay, Anushri. So this 4 square is 16. Okay, 4 squared 16. And 7 times 3 is 21. Okay, 7 times 3 is 21. Plus 4 is 25. 7 times 3 is 25. This, yes, 2516, correct answer. So we know that Anushri also understands this. Okay, so for one more, we'll do one more example problem and then we can end class. This last one. Okay, 26 times 86. So one of the people who has not gone yet. Rati, आप इसको explain कर सकते हैं? आवाज नहीं आ रही है। Yes, it now sounds coming.
तो गिरीश आप इसका आंसर दे सकते हैं? आप इस प्रॉब्लम का आंसर दे सकते हैं? 2686. तो फिर एक और क्वेश्चन पूर्णिमा आप इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं? Can Ridhiman give? As no Okay. one is answering, so I can. Okay, तो रिद्धिमान आंसर दे सकता है. The answer will be like 8 plus 1. Oh, plus 2 into 8. Yes, 2 into 8 plus 6. So, 8 to the 16. And 16 plus 6. When added 6. We will get 22, and 6, then we will do 6 square, which will be into 6 into 6. We will get 36. Now 22 and 36 when combined, we will get 2236. Yes, 2236 और फिर वो फाइनल आंसर. Okay, तो हम प्राची आप एक क्वेश्चन करना चाहती हो? Do you want to try one question? No. Okay. So I think what's it then? So we'll just do one review question. I mean, we'll view the review slide right now to see what we have done today. We did 2 topics. Just wait one moment. Okay, so तो आज हमने सीखे कि हम सीखे टोटलिंग 10 जहां 10 सेम है और one's digit add up to 10, जैसे कि 49 times 41 equals 2009, or totaling 10 with the one same or 10's digits add up to 10, जैसे 24 times 84 equals 2016. इस मेथड को प्रैक्टिस कीजिए और फिर आप तो फिर आपको याद रहेगा कि इसको कैसे करें. तो जब आप होमवर्क करें हैं तो फिर when you finish your homework, you can continue making your own problems and solving them if you need more problems to do. Because the more you do them, the more you can understand the thing fuller. And I think that's the end of the day. And okay. So that's the end of today. We can. Our time हो गया. Okay. तो टाइम हो गया है तो फिर भी हम बाबा को याद करेंगे और फिर क्लास को एंड करेंगे.
शांति। ओम शांति। शांति ओम शांति। ओम शांति। शुभ रात्रि। ओम शांति। शुभ रात्रि। ओम शांति।